Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back, and today we are going to talk about fundamentals of public administration. The course code is MPA 406, and before moving on towards our today's lecture, so let us have a reflection of our previous lecture. Now let us discuss that what we have discussed in our previous lecture. Okay. In our previous lecture, we have talked about the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. Now, according to this Constitution of Pakistan, we discussed different articles pertaining to human dignity and respect given in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973, and those articles are, we discussed in our last lecture about freedom of association. Now, freedom of association से क्या मुराद है? Freedom of association से ये मुराद है कि किसी भी इदारे में, like here we are talking about the public sector of Pakistan, कि in any organization people can form association, or people who are working in that organization, they can form unions. Now, यहाँ क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था कि why employees working in any organization, why they want to have association or why they want to have a union. तो यहाँ पे justification हमने जो डिस्कस की थी in our previous lecture, that was कि in any organization, in any workplace, conflicts is a natural phenomena. So whenever we talk about conflicts, what comes in our mind? Okay, there are positive conflicts and there are negative conflicts. Here we mean that we have both types of conflicts in the organization. Now, in case of conflicts in the organization, what happens that employees, they have sometimes issues or problems with the top management, and same is true for the top management as well, that top management, they also have certain considerations regarding their employees. Now, both the parties, the top management and the union, they have certain issues, so they need to sit together and they need to talk about those issues, they need to talk about those challenges, and they need to talk about those problems. Now, from the management side, they also have certain representatives who are representing the top management. From the employee side, of course, there is a representation in the form of an association or in the form of a union that is elected by the employees of that particular organization. Now, union and top management, they sit together and then they discuss the issue or the problem faced by employees or faced by the top management, and then they come up with certain solutions. Now, here in our previous lecture, we talked about different strategies, and we highly recommended that both the parties should go for win-win strategy. Now, what do we mean by win-win strategy? Win-win strategy means that both the parties win. Now, the question here arises that how both the parties can win at the same time. Now, according to the win-win strategy, like a union, they have certain demands, and then on the other side, the top management, they have certain concerns. Now, top management want to have more productivity. They want that the employees should achieve the targets which they have assigned to them. On the other side, employees, they have problems, like for example, they want promotions, they want more rewards, and they want more motivation. So both the parties, they come up with their points. So union, they show their points to the top management. On the other side, the top management communicates their concerns. So both the parties, they agree on few things, and the other things, for other things which they don't agree, they create a document, or they create a gradual solution that, okay, in the times to come, they are going to solve the remaining problems. But at present, what they do is that both the parties, they agree on most of the points of the both sides. So union, most of the demands made by union, top management agrees with it, and on the other side, union also agrees on most of the concerns of the top management. So when both the parties returns, like in case of union, जब यूनियन अपने एम्प्लॉइज़ के पास वापस जाती है, तो एम्प्लॉइज़ को वो ये बताते हैं कि हमने अपने मुतालबात जो पेश किए, उनमें से बेशतर मुतालबात
को हमने वहाँ से एक्सेप्ट करवा लिया टॉप मैनेजमेंट से। ऑन दी अदर साइड, जब टॉप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपने टॉप मैनेजमेंट ऑफिस में जाते हैं और वहाँ जाके वो कम्युनिकेट करते हैं कि जो हमारे मेजर कंसर्न्स थे यूनियन ने उसके साथ एग्री किया है। ना ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है और both the parties sign it, and that is why this is called win-win strategy, because both the parties are happy. So in this freedom of association, we said that the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan of 1973 ensures that the public sector organizations, they may have unions or associations which represents the rights of its employees. Next article we discussed in our previous lecture was about freedom of trade, business or profession. Now this is really very important that all the persons who are living in Pakistan, they of course for their living and for their lifestyle and for any other reason, they need to be involved in some kind of business, trade or profession. So in Pakistan there is no restriction on any kind of business or profession or trade, but of course these businesses, professions or trades should be according to certain boundaries, according to certain limits. So those limits and those boundaries are defined in the Constitution of 1973. Next we talked about freedom of speech. Now this point is really very important here, because आजकल हम देखते हैं कि हर तरफ मीडिया का दौर है. Everybody is talking about media. कि मीडिया के ऊपर issues are there, and of course when we open our television sets or when we listen to radio, we have like so many channels, and particularly when we talk about news channels, I think के news channels की तादाद जो है बाकी channels की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है इन पाकिस्तान. जब हम बात करते हैं तो जब हम freedom of speech की बात कर रहे हैं तो definitely कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का 1973 ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करता है. ना फ्रीडम ऑफ स्पीच को इंश्योर करने के साथ साथ ऑफ कोर्स जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, नंबर वन. दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इस चीज़ को इंश्योर करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब ना लिया जाए कि कोई ऐसी बात जो कि हमारे फ्रेंडली जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस हैं या जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात को जो है कोई ख़तरा ना हो और कोई ऐसी बात हमारी मीडिया के ऊपर ना आए जो कि पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने का बायस बने. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 इस चीज़ को इंश्योर करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डेफिनेटली तमाम जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको ये हासिल है, लेकिन इसके साथ साथ देर आर सर्टन बाउंड्रीज जिनको फॉलो करना जो है इनके लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. नाउ इस आर्टिकल में जैसे कि टाइटल से जाहिर है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और रिलीजन की बात कर रहे हैं कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मजहबी आज़ादी हासिल है और दीन इस्लाम को वहाँ पे जो भी सेरेमनीज़ हैं, जो भी इवेंट्स हैं और जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं एज़ पर आर रिलीजन इस्लाम, वहाँ पे तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसकी इजाज़त है. एंड पर्सनस जो कि वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इजाज़त है कि वो दीनी सरगर्मियों में दे कैन इन्वॉल्व देमसेल्व्स, दे कैन पार्टिसिपेट एंड थिंग्स लाइक दैट. देन वी टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स. नाउ इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स से क्या मुराद है? इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स से ये मुराद है कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान दे आर इक्वल. Now, there is no discrimination on any basis. For example, there is no liking or disliking on the basis of caste, gender, male or female, different cultures, or maybe place of birth. So there should be no discrimination due to any factor. And all the persons who are living in Pakistan, they have full rights. They have equal rights. So none of the organizations in Pakistan and none of the rules in Pakistan are made in a way जो कि इस चीज़ को restrict करें. So equality को, जो citizens की equality है, उसको ensure किया गया है Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 में. Then we talked about
non-discrimination in respect of access to public places. Now this point again is really very important कि जो public interest के जो places हैं या ऐसे places जो जहाँ पे एक public access जो है जहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे लोगों की फॉर एग्जांपल कोई उनका इंटरेस्ट है, उनकी मोटिवेशन है वहाँ जाने के लिए, तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि जो एक्सेस है पाकिस्तानियों का पब्लिक प्लेसेस पे, उस पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और पब्लिक प्लेसेस पे तमाम पाकिस्तानी दे कैन विजिट एनी टाइम और वहाँ पे किसी किस्म की उनको पाबंदी का नहीं सामना करना पड़ता. एंड ऑफ कोर्स जो हमने सारे इस पॉइंट स्लाइड में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उनको अगर ओवरऑल देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 ensures these wonderful things. And then in our previous lecture we also talked about the security of persons. Now security of person in any country is really very important. तो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस चीज़ की गारंटी देता है कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं होगा और अगर उनके लिए कोई थ्रेट होता है या उनके लिए कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो सिटीजन्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ हैं या जो पाकिस्तान में तमाम लोग रहते हैं उन सब के लिए उनकी सिक्योरिटी का जो उसको मैनेज करना है, दैट इज़ द बेसिक responsibility of the government of Pakistan. Then we talked about safeguard as to arrest and detention. Of course, किसी भी दुनिया की सोसाइटी में of course जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ पे क्राइम्स या इस तरह की सिचुएशन भी एक क्रिएट हो जाती है. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का 1973 इसने यहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं इनके राइट्स को डिफ़ाइन किया है कि अगर किसी पाकिस्तानी को पुलिस ने अरेस्ट करना है या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने अगर किसी पाकिस्तानी को अरेस्ट करना है तो उससे पहले उनको अरेस्ट करने से पहले उस पर्सन को उसको रीज़न बतानी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वाई वी आर गोइंग टू अरेस्ट यू, वन थिंग. एंड सेकेंडली अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो अगेन उसके लिए ज़रूरी है कि उस जिस पर्सन को आप डिटेन करना चाहते हैं या अरेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर्सन को आप पूरा फ्रीडम देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का लॉयर जो है उसको वो इंगेज कर सके, उसकी सर्विसेज को वो हासिल कर सके. इस काम के लिए जिस पर्सन को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं अगर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है भी तो उसके बावजूद भी उस पर्सन को पूरी आज़ादी होगी कि वो अपनी मर्ज़ी का लॉयर इंगेज कर सके, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को कांटेक्ट कर सके, टेलीफोन कर सके, मुलाकात कर सके ताकि वो अपने केस को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सके इन कोर्ट. Then in our previous lecture we talk about another article pertaining to the dignity and respect of the people of Pakistan, and that is sacredness of dignity of man. Now this is really very important, that dignity of man is really very important. If there is no dignity, of course this is not recommended. So Constitution of the Islamic Republic of Pakistan इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो इंसानी अज़मत है और जो ह्यूमन डिग्निटी है, कोई भी ऐसा काम जो ह्यूमन डिग्निटी के ख़िलाफ़ हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी की खुददारी के ख़िलाफ़ हो, किसी की रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी की पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन of Pakistan 1973. Then we talk about freedom of movement. Now freedom of movement means what? Like any person who is a citizen of Pakistan can move freely from one place to the other. Now any place can visit any place, like for example any person can visit any place in Pakistan. Like for example a person living in Lahore, if that person wants to shift to Karachi or Quetta or Islamabad, Rawalpindi or any other area of Pakistan, that person is allowed according to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1973. So there is no restriction.
इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ जो है वहीं पे आपने रहना है। सो किसी भी वजह से कोई पर्सनल रीज़न आपका हो सकता है, प्रोफेशनल रीज़न आपका हो सकता है, आपका कोई बिजनेस रीज़न हो सकता है, आपकी विल हो सकती है कि आप किसी और जगह पे अगर रहना चाहते हैं, तो किसी तरह की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जहां आपका दिल करे, जहां आप जाके रहना चाहते हैं, जहाँ पे आप रेजिडेंस रखना चाहते हैं, और जहाँ भी जाके आप किसी भी इलाके में जाके अगर जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको इजाज़त देता है और वो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं विद इन पाकिस्तान किसी भी इलाके में। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट फ्रीडम ऑफ असेंबली। नाउ अगेन आजकल जो हालात हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है यहाँ पे ये काफ़ी आजकल डिस्कस किया जा रहा है कि एक जगह जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके देन दे स्टार्ट डिबेटिंग, और जब वो तकारीर कर रहे होते हैं और अपने इश्यूज़ को वो हाईलाइट कर रहे होते हैं और ऑफ कोर्स मीडिया उन पे फोकस कर रहा होता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है, ये आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो पाकिस्तानी पर्सनस हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, दे कैन असेंबल एट एनी प्लेस एंड देन ऑफ कोर्स they can talk about different issues, they can debate, they can discuss, they can argue। लेकिन यहाँ पे एक दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है according to the constitution of Pakistan। Number one thing is कि that assembly or that when people get together at one place or when they assemble at one place, number one thing is कि they need to maintain that peaceful environment। Now if anything happens which is violating the peace, that is not allowed। So जब लोग बहुत से एक जगह पे गैदर होते हैं तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा पाकिस्तान का 1973 का, ये इस चीज़ की आपको इजाज़त देता है कि पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं वो किसी भी मकसद से, किसी भी पर्पज़ से एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे वो इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे दो कंडीशंस इम्पोज की गई हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि पीसफुल एक होना चाहिए तमाम इवेंट, तमाम जो एक्टिविटी है वो पीसफुल हो जब लोग एक जगह इकट्ठे हों। और दूसरी जो बात की गई कि यहाँ पे जो विदाउट आर्म्स के असला और किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप जो जनरल पब्लिक है वो हर्ट ना हो जाए, तो डेफिनेटली विदाउट आर्म्स एंड विद टोटल पीसफुल जो एक आपकी एक जगह पे आप असेंबल हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आपको ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखें, उसके बाद यू कैन असेंबल एट एनी प्लेस, और उसमें किसी किस्म की कोई आपको मना नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, then in our previous lecture we have talked about the main contributors of classical school, and now those contributors were Woodrow Wilson, Leonard D. White, W.F. Willoughby. We talked about Frederick Winslow Taylor. We have talked about Henry L. Gant, and then we talked about Frank and Lillian Gilbreth. Okay, in our previous lecture we have talked about classical school of thought, and in this school of thought we have talked about the major contributors of classical school, and those were the first one is Woodrow Wilson, then we talked about Leonard D. White, then we talked about W.F. Willoughby, we talked about Frederick Winslow Taylor, then we discussed the contribution of Henry L. Gant, and then we talked about Frank and Lillian Gilbreth. Now all of these major contributors we have discussed in depth in our previous lecture. Now we move on to the next contributor towards like classical school of thought, and that is Max Weber, 1864 to 1920. Now Max Weber was a lawyer who got interested in the social aspects of organizations. Now here we see that the Max Weber, his major focus on the social aspects of any organization, and during his time markets were become booming, and his lifelong work on the study of organization led to believe that specific kind of organizations called bureau
we call like desk will help in the growth of markets. So Max Weber, he talked about organizations, he focused on the social aspects of the organization, and then he talked about the desk or the place of work that can help the organization to grow. Now Max Weber gave following main characteristics of the bureaucracy. So these characteristics are, the first one is hierarchy of authority, then impersonality, then written rules and documents, then promotion based on achievement, then specialized division of labor, and finally efficiency. Now I'm going to discuss all the major characteristics of bureaucracy one by one, and we start with hierarchy of authority. Now what do we mean by hierarchy of authority? Now hierarchy is the various levels in the organization. Now let me give you few examples. Like मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में डेफिनेटली आपका विजिट होता होगा, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, या आप में से वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो लोग जो कि किसी जगह पे एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं. नाउ जो डिफरेंट लेवल्स हैं उससे क्या मुराद है कि किसी भी एक, लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. वी टॉक अबाउट लो लेवल, we talk about middle level, and then we talk about top level management. So these are the 3 levels. I repeat: low level management, then we have the middle level management, and then we have the top level management. Now in any organization, these levels have different activities to perform, and all of these levels, they have different authority levels as well. Like for example, when we talk about the public sector of Pakistan, there is more decision-making authority, more decisions are made at the top level. So the top management has the highest authority when we talk about the public sector of Pakistan. Then the middle management, they have less authority, and then of course the low management, they have the least authority in any public sector organization. Now we are talking about the hierarchy in the organization. Now hierarchy again means that like for example different channels in the organization. Like for example एक organization में जब आप देखते हैं कि like for example BPS 1 and then BPS 2, BPS 3, BPS we mean basic pay scale. Now in the public sector of Pakistan, they have different grading system. Like for example, they may have that special scales, or they may have these BPS scales. So नीचे से लेके ऊपर top management तक they have different grading systems. They have different ranks. They have different designations. Now every designation, every rank has हायर अथॉरिटी. जैसे जैसे कि आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द हायरार्की. नाउ हायरार्की आल्सो मीन्स दैट who is reporting to whom. This is really very important to know that in any organization, how you know that who will report to whom, and this is only possible when there is a hierarchy in the organization. अगर किसी organization के अंदर hierarchy नहीं होगी, like for example we call it reporting hierarchy, कि अगर किसी organization के अंदर एक reporting hierarchy नहीं होगी, तो आप अपने खुद से अपने आप से क्वेश्चन करें कि आप अगर एक organization में जिस वक्त आप काम कर रहे हैं, या आपके घर में से कोई काम कर रहा है, तो आप उसे डिस्कस करें कि अगर एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होगी कि कौन से एम्प्लॉय ने किस एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना है. नाउ जब तक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप नहीं होगी, उस वक्त तक बेहतर तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती. तो हायरार्की जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी क्या उनका ग्रेड है, क्या उनका लेवल है, और अकॉर्डिंग टू लेवल उनकी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किस किस के साथ है, उन्होंने किसको रिपोर्ट करना है. तो डेफिनेटली जो हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की, ये इंश्योर करती है इम्प्रूव परफॉर्मेंस को और बेटर रिलेशंस को इंश्योर करती है. देन वी टॉक अबाउट द अथॉरिटी. Now authority is the ability to exercise influence over a group of people. Now people have different authorities. As I earlier told you that the top management, they have the highest authority.
Now, all the major decisions are made at the level of top management. Now, top management के पास तमाम एक ज़्यादा अथॉरिटी है. in some cases तमाम अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, और डेफिनेटली उस अथॉरिटी को जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन ए ओवर ए ग्रुप ऑफ पीपल. लाइक टॉप मैनेजमेंट जब कोई डिसीजन लेती है तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट है, उसका एक इन्फ्लुएंस है उन तमाम लोगों पे जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. देन मैक्स वेबर डिस्टिंग्विश्ड 3 मेन टाइप्स ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी की यहाँ पे 3 टाइप्स को मैक्स वेबर ने डिस्कस किया. द फर्स्ट वन ही टॉक्ड अबाउट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी. नाउ ट्रेडिशनल अथॉरिटी से क्या मुराद है? द अथॉरिटी दैट वन इनहेरिट्स. फॉर एग्जाम्पल द सन ऑफ किंग विल बी द फ्यूचर किंग. In traditional societies, the authority is transmitted. Now, जब हम देखते हैं कि एक जो है बादशाह है, उसका जो बेटा है, he will be the next king उस स्टेट का, उस इलाके का, उस मुल्क का वो नेक्स्ट किंग होगा. तो ये वो अथॉरिटी है जो उसको इनहेरिटेंस में मिली है. लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं कि वली अहद, कि जब इसके जो एल्डर हैं या इसके जो पेरेंट्स हैं या इसका फादर जो है, सपोज ही इज़ अ किंग ऑफ दैट कंट्री, तो जब वो किंग अपनी उस डेजिग्नेशन को मतलब वहाँ से रिज़ाइन करता है, या इन केस के उसकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर कर जाता है, तो इन दैट केस जो नेक्स्ट उसका जो एल्डेस्ट सन है या जिसको वो नॉमिनेट करता है अपनी फैमिली में से, सो दैट पर्सन बिकम्स द न्यू किंग. नाउ यू सी दैट कि दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और इस दुनिया में है, इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट अथॉरिटी टाइप इज़ charismatic. Now charismatic authority means that it is the authority that one possesses because of one's personal traits and abilities. For example, TV artists, sports stars, etc. Now ये वो एक अथॉरिटी है जो कि एक आपकी charismatic personality की वजह से है कि like for example, if you have like for example wonderful communication skills, if you have wonderful presentation skills, if you are good in sports, and if you are a TV artist or if you are a celebrity, things like that, तो आपकी शख्सियत की वजह से, आपकी कुछ ख़ास ट्रेड्स की वजह से, आपकी कुछ ख़ास एबिलिटीज़ की वजह से, जो कि आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश कर रही है, जो कि दूसरों से आपको बेहतर शो कर रही है, एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी कॉम्पिटेंस, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा ट्रेड जो कि आपको दूसरों से बहुत आगे ले जाता है, उस सूरत में दैट बिकम्स योर कैरिस्मेटिक अथॉरिटी. और करिस्मेटिक अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करिस्मेटिक एबिलिटीज़ उनके पास हैं, उनकी बात के ऊपर लोग बहुत तवज्जो से उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात पे अमल किया जाता है, और उनको बहुत ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब हम बात करेंगे अगर हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर की, तो पहला नाम जो हमारे जहन में आता है वो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब का. तो जब हम ईदी साहब की बात करते हैं तो ईदी साहब हैज़ अ वंडरफुल कैरिस्मेटिक अथॉरिटी. सो उसके अंदर डेफिनेटली उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो ट्रेड्स हैं, उनकी जो एक जज्बा है, एक मोटिवेशन है टुवर्ड्स द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, टुवर्ड्स द नीडी पीपल ऑफ पाकिस्तान. सो वो एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है, और यही चीज़ उनको डिस्टिंग्विश करती है ईदी साहब को बाकी तमाम लोगों से. सो डैट मीन्स डैट कि कैरिस्मेटिक जो एक अथॉरिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आप ऐसा करें या कोई आपकी ऐसी एबिलिटी हो जो दूसरों से बहुत बढ़ के हो. Then the next authority type we are going to discuss here is rational legal authority. Now, it is the authority that is acquired as a result of a position. For example, policeman has authority because of the position. Now, this type of authority is only with the position. So if
in this example we talk about the policeman has authority because of his position, meaning that कि अगर इस पुलिस ऑफिसर के पास अगर वो पोजीशन नहीं रहती, अगर वो रिज़ाइन करता है या अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद क्या वो अथॉरिटी उसके पास रहती है? नहीं। मीनिंग दैट कि एक अथॉरिटी जो कि आपके डेजिग्नेशन की वजह से आपके साथ है, लाइक फॉर एग्जांपल कि हम जब बात करते हैं टैक्स कमिश्नर की हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एक किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की हम बात करते हैं, हम किसी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर की बात करते हैं, हम किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात करते हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की, वाइस चांसलर की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इन तमाम पोजीशंस के साथ, इन तमाम डेजिग्नेशंस के साथ अथॉरिटी एक अटैच है. So you enjoy that authority, you can use that authority as long as you occupy that particular designation. The moment you leave that position, the moment you resign, or the moment you are, like for example, retired from that position, that authority is no more. So in this discussion we have talked about different types of authority. We talked about traditional authority, we talked about charismatic authority, and then we talked about rational legal authority. So one may possess a mix of these above authorities. तो जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली देयर आर मैनी एग्जांपल्स जहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सन्स के पास एक कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है इन अथॉरिटीज़ का. लाइक फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी का अगर एक हेड है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सो दैट पर्सन हैज़ द अथॉरिटी बिकॉज ऑफ डेजिग्नेशन. सो दैट मीन्स दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी. बट एट द सेम टाइम इफ दैट पर्सन हैज़ वंडरफुल एबिलिटीज, इफ दैट पर्सन हैज़ वंडरफul traits, if that person has wonderful competence, so that also means that particular person has a wonderful charismatic authority. So when we talk about different persons, of course those different persons, they may have a combination of these authorities. Now we move on to the next characteristics, and that is impersonality. Now impersonality means that the official is provided all equipment to carry out his duties. He does not own the means of administration. Where activities are completed impersonally, which means that the self of individual is not involved in the work. Now what does it mean? We need to be impersonal. We need to be like unbiased. Like for example, if we develop our personal liking or disliking, then it is not good for the organization. So what we need to do here is that according to the Constitution of Pakistan, it says that we need to have when we are talking about the public administration, when we talk about the public sector of Pakistan, so your personal interest should not be there. So the same thing is here said by a classical school of thought, that the individual's selfish interest should not be there in the work, at the workplace. So when you have your selfish interest, when you have your personal interest in your work, so that means that if you are trying to get the personal benefits, so of course that is against the law. So in our offices, at our workplace, we need to be impersonal, and we should not involve ourselves in the work. Like for example, we should not involve our personal objectives at our workplace, and if we bring our personal objectives at workplace, of course that can damage the interest or performance of the organization. Then we talk about written rules and documents. Now bureaucracy demands that the written rules of the organization be strictly followed and that the officials remains loyal. So here two things he has discussed over here. The first thing is following the written rules and regulation, right? And then the next thing is the employee needs to be loyal with the organization.
So having that loyalty with the organization is really very important, and of course following the rules and regulation is also very important. So a person who is following the rules and regulations, of course in the long run that person also becomes loyal with the organization. Even when we talk about the public sector of Pakistan, we see wonderful examples of people working in the public sector who have extreme loyalty with their organization. People use, like for example, their best efficiency, their best effectiveness to do the best at their workplaces. So this is really very important, that they are following rules, and of course they are trying to of course show their loyalty to the organization, which is really very important. Okay, the next point is, all the work in organization is written. Compliance is to the written instructions. Now, according to this rule, everything is written, everything is documented. If you are not writing everything, and it means that आपने ज़बानी कोई बात कर दी, आपने oral communication कर दी, तो ज़बानी बात या oral communication जो है उसकी अहमियत नहीं है जब तक कि उसको रिटन डॉक्यूमेंट की शेप में न लाया जाए. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिसेज में डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं. ना मीटिंग का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि मीटिंग होने से पहले उसका एक एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है. एजेंडा मींस कि कौन से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं. अच्छा, उस एजेंडा में डिफरेंट पॉइंट्स जो आपने डिस्कस करने होते हैं अपने डिफरेंट कॉलीग्स के साथ, अपने ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ, उनको हम कहते हैं एजेंडा आइटम्स. ना उन एजेंडा आइटम्स को जब आपने डिस्कस करना है तो डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिए जाते हैं. नाउ मिनट्स ऑफ द मीटिंग से क्या मुराद है कि वो जो कुछ भी उस मीटिंग में डिस्कस किया गया उस तमाम एक्टिविटी को, तमाम डिसीजंस को, तमाम डिस्कशन को ऑन द पेपर इन राइटिंग लेके आते हैं, और उसके बाद मीटिंग के एंड पे तमाम जो मीटिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि कौन कौन से डिसीजंस जो हैं तमाम ग्रुप मेंबर्स ने, तमाम टीम मेंबर्स ने लिए हैं उनको, और जहाँ जहाँ पे अगर किसी का कोई इख्तलाफ है या अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है. तो मिनट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भिजवाए जाते हैं, एंड देन उस मिनट्स के ऊपर सिग्नेचर होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, और तमाम जो मेंबर्स हैं उस मीटिंग के उन तमाम मेंबर्स के सिग्नेचर करवाए जाते हैं. सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और तमाम चीज़ों को इन राइटिंग लेके आना है. ज़बानी बात की ऑफिस के अंदर कोई अहमियत नहीं है. आई रिपीट दिस थिंग दैट यू नीड टू राइट एवरीथिंग एंड यू नीड टू डू एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. The next point here we discuss here regarding classical school of thought is promotion based on achievement. Now bureaucracy requires the task assigned to an official performed and completed in an efficient and effective manner. Now promotion is based on the level of skill and ability of the official. Now again the thing is here the emphasis is on the efficiency and effectiveness of employees. Now what do we mean by efficiency and what do we mean by effectiveness? In our previous lecture, we have talked about these two factors. आपके ज़हन में आ रहा है कि what is efficiency and what is effectiveness? How do we differentiate both of these? Okay, efficiency means that with minimum input, you try to get the maximum output. This is called efficiency. Okay, in effectiveness, what you do is you try to get the desired goals, you try to get the desired objectives. So it means that one person who's working in the organization, that person needs to be efficient as well as effective, right? And then promotion of any person in the organization is based on the level of skill and ability of the official. Now level of skill and ability is really very important. So in any organization there must be promotions on the basis of achievement, on the basis of performance. और performance criteria आपका क्या होगा? Definitely efficiency and effectiveness. Okay, we are talking about the general characteristics of bureaucracy, and the next one is specialization or division of labor. Now here
each person should perform a given and assigned task. Now here we means that each person has certain responsibilities to perform. Now किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका एक अपना रोल है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। अच्छा, उस रोल को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि उन पर्सनस को इन्फॉर्म किया जाए, उनको कम्युनिकेट किया जाए, उनको ओरिएंटेशन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो डेफिनेटली वो जो परफॉर्मेंस है उन पर्सनस की वो इंक्रीज़ कर जाती है। द एग्जाम्पल इज़ a person assigned the task of typing should only perform that task. He should not be asked to do other work. Like for example, if he or she continues to perform the task, she will develop competence in that area. Now it means that we need to train our employees. We need to sharpen the skills of our employees. So अगर आपने एक पर्सन को हायर किया है टाइपिंग के लिए तो डेफिनेटली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको टाइपिंग का ही काम आप दें। अगर किसी पर्सन को आपने इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए रखा है तो कोशिश ये करें कि आप उसको इक्विपमेंट रिपेयर के अंदर ही रखें, ना कि ये हो कि जिस पर्सन को आपने इक्विपमेंट रिपेयर के लिए रखा है उसको आप कहें कि आ जाओ भाई कंप्यूटर पे बैठ जाओ, और इसी तरह वाइस वर्सा के जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उनको आप कहें कि चलें कभी कभी आप इक्विपमेंट को भी ठीक क्या करें। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस दैट we need to follow the rules and regulations, and according to the rules and regulations जिस पर्सन को भी ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है उस पर्सन के लिए पहले से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डिफाइन कर दी जाती हैं, और जो न्यूली हायर्ड पर्सनस हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग या ओल्ड एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो आप अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए जो टास्क आपको असाइन किया गया है उसको आपने परफॉर्म करना है, और उसी टास्क को उसी एक्टिविटी को आगे ले जाके आपने अपनी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करनी है। द नेक्स्ट इज पिन मेकिंग. So another example when we talk about the specialization or domain of work is of pin making given by Adam Smith. Now if the pin is made by one person he will take longer according to Adam Smith, but if the wire is straightened by one person, the other person cuts the wire and the third person rounds the head of the pin, then the output can be increased due to specialization. Now आप मुझे ये बताएं कि ये स्पेशलाइजेशन कैसे होगी? जी, आपके ज़हन में क्या आ रहा है? ओके, आई विल टेल यू, उसमें आप खुद भी साथ सोचें कि जो मैं बात आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करके मैं बताता हूँ कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उस काम को आप मुख्तलिफ मेजर टास्क और सब टास्क में आप डिवाइड कर लें। जब उस एक्टिविटी को सब टास्क मेजर टास्क में आप डिवाइड कर लेते हैं तो जो एक ही तरह का काम है, लाइक फॉर एग्जांपल कि आपने अगर कोई कटिंग करनी है तो बजाय ये कि एक पर्सन को आप सारा काम दे दें, उसको वही काम दें। फॉर एग्जांपल अगर कटिंग का काम है किसी और को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये टेबल फॉर एग्जांपल बनाना है तो आप बजाय ये कि पूरा टेबल एक ही पर्सन बनाए, ये भी तो किया जा सकता है कि इस टेबल का जो रॉ मटेरियल है उसके लाने के लिए डिफरेंट पर्सन हो, इस टेबल की जो कटिंग है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन और शेप उसके लिए अलग पर्सन हो, इस टेबल को आपस में जोड़ने के लिए और उसको जो भी तरीका है उसके लिए अलग पर्सन हो, और डेफिनेटली जब फाइनली इस टेबल को जब आप पॉलिश करते हैं तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी है उसके जो मेजर टास्क हैं उसके सब टास्क हैं, जो एक जैसी एक्टिविटी है उस एक एक्टिविटी को एक पर्सन को आप असाइन कर दें। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल मेकिंग है, इस टेबल मेकिंग में अगर आप एक ही पर्सन से सारे काम करवाएंगे तो एक तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होगा डेफिनेटली, और दूसरा ये काम बोरिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करें, उनको वो काम दें जिसमें उनकी कॉम्पिटेंस है। तो उनकी जो एक अपना एप्टीट्यूड है जिसमें उनकी ज़्यादा कॉम्पिटेंस है, तो अगर एक पर्सन जो कि पूरा टेबल बना रहा है, जो पूरा टेबल उसकी तमाम कटिंग से लेके उसकी पॉलिश तक तमाम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आप उस पर्सन से इंटरव्यू करें, उससे डिस्कशन करें कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट जो है बाकी से ज़्यादा है, तो वो जो एक्टिविटी उसके इंटरेस्ट की है और जिसमें वो समझता है, जिसमें वो प्रूव कर सकता है कि जी मैं
जो मेरे पास स्किल है उसका मैं बेहतर फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो वो एक्टिविटी उसको दी जाए ताकि वो उस एक्टिविटी करने के बाद वो उसके अंदर एक्सपर्टीज़ उसकी डेवलप हो जाए, उसके अंदर एक उसका बेंचमार्क बन जाए, ताकि वो उस काम में एक क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना हो. Okay, then we talk about like efficiency, achieving maximum output with minimum input. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Okay, the next contributor in classical school of thought is Henry Fayol. Now, Henry Fayol is also called the father of modern management theory. Now, here we talk about Henry Fayol. He was a French industrialist. So his book on general administration appeared in 1916. It was written in French. Henry Fayol found that activities of industrial undertaking could be grouped in 5 parts. Now those 5 parts are production, commercial, financial, security and managerial. Now Henry Fayol has given different principles of management, and these are the very popular principles, and these are called 14 general principles of management. And the first one is division of work. Now at any workplace, this is really very important that there must be division of work. कि काम जो भी आपकी organization को करना है उस काम को आप divide करें. ना उस काम को डिवाइड करके आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को वो एक्टिविटीज़ असाइन करनी है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को आपने एक्टिविटी असाइन करनी है, और एक डिवीजन ऑफ वर्क जो है उसमें आपने ये देखना है कि किसी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो एक बैलेंस वर्कलोड के साथ आपने ये डिसीजंस लेने हैं. द नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. So when we talk about the public sector of Pakistan, this is really very important to know that कि authority and responsibility जो है उसका आपस में link बहुत strong है. जब आप किसी पर्सन को बहुत अथॉरिटी देते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको देने की ज़रूरत है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि अगर कुछ लोग करप्शन करते हैं तो वहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है कि अथॉरिटी तो उस पर्सन के पास थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी अनक्लियर हमें नज़र आती है. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है वो जितनी ज़्यादा आपकी अथॉरिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है वो उतना स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि जो करप्शन है, जो प्रॉब्लम, जो बैड एक्टिविटीज़ हैं, जो क्राइम्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सके. देन वी टॉक अबाउट डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ या पब्लिक प्राइवेट अगर ऑर्गेनाइजेशन की आपस में कोई एग्रीमेंट होता है, या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंडिविजुअल्स के साथ या किसी और कंपनी के साथ या पब्लिक सेक्टर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट को आपने फॉलो करना है. यू मस्ट रिस्पेक्ट दैट एग्रीमेंट. और अगर आप उस एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट नहीं देते तो डेफिनेटली यू लूज योर मार्केट रिप्यूट. द नेक्स्ट इज unity of command. The employees should receive order from one supervisor only. Now this is really very important कि एक सुपरवाइजर से आपको तमाम ऑर्डर मिलने चाहिए, और अगर आपको एक से ज़्यादा तरफ से ऑर्डर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी द कंफ्यूज पर्सन. तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे शुड बी like inform that they need to follow the orders or instruction of such and such person. Now यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है कि एक सुपरवाइज़र आपको ऐसा हो जो कि डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दे सके, उनको काम करने का तरीका बता सके, things like that. Then we talk about unity of direction. Now each group of activities with same objectives must have one head and one plan. So this is really very important that the unity of direction should be there. So each group of activities with same objectives must have one head and one plan. So this is really very important कि आपका एक head होना चाहिए
जो कि आपको गाइड कर सके, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको डिफरेंट तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर आपकी डिपार्टमेंट के दो हेड्स हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, और एट द एंड वो जो दो हेड्स हैं अगर, तो उन दोनों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. तो डेफिनेटली दिस इज हाईली रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज वेल. Then in this classical school of thought, talking about the general principles of management, the next one is subordination of individual interest to the general interest. The manager should work in the interest of organization. Now, another very important thing discussed by Henry Fayol in this classical school of thought, in the general principles of management, he said that there should be subordination of individual interest to the general interest. Now, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय के सर्टन उसका इंटरेस्ट अपना एक सेल्फिश, उसका एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट है. एक तरफ तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है. तो यहाँ पे हेनरी फेयोल ने ये बात की कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है दैट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट. तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप बाद में देखते हैं, लेकिन पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फोकस करना है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज जनरल प्रिंसिपल्स. देन he has talked about remuneration. Methods of payment should be fair and give maximum satisfaction to employee and employer. So again, this is really very important that remuneration should be appropriate, remuneration should be as per ground reality. तो अगर आपका remuneration जो है as per ground reality नहीं है, अगर आपकी जो payments हैं वो fair नहीं है, और अगर वो आपको maximum satisfaction नहीं दे रही, तो definitely the result is poor performance. So according to Henry Fayol, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेफिनेटली, और पेमेंट्स प्रोसीजर जो है दैट मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. We continue with the general principles of management, and the next is centralization. The extent to which the authority is concentrated in one person or dispersed in the organization. Now this is really very important. In public sector of Pakistan, we have centralization of decision-making authority. Now, when we talk about centralization, the next terminology that comes in our mind is of decentralization. Okay, any one of you knows the difference between centralization and decentralization? Okay, I tell you. Okay, centralization means that when all the decision making इख्तियारात जो हैं आपके, जो आपकी authority है, तमाम जो rule making या decision making authority है, that comes in the hands of few people. So there is a small group of people who has all the authority of the organization. They have the decision making authority and they are making all decisions. So what we need to do here is we need to of course think about the solutions of the problem. In advanced countries there is no more centralization, but in Pakistan we see that centralization is still here. Then we talk about scalar chain. Now scalar chain here means that line of authority or chain of command. So in any organization of course there is a line of authority or chain of command कि जो भी organization के अंदर लोग काम कर रहे हैं they should have a chain of command, and then order a place for everyone and everything in its place. Now this is called like for example आप बात कर रहे हैं, अपनी organizing की बात कर रहे हैं, एक order की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी जगह है जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम की जब हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डर. एंड देन एक्विटी की जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जस्टिस एंड फेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स. नाउ मैनेजर्स दे नीड टू मेक वेरियस डिसीजंस ऑलमोस्ट एवरी डे. So in those decisions there should be justice and fairness. And now if in those systems if there is no justice and if there is no fairness, of course the result could be worse and people will start leaving that organization. So this is really very important. We need to be highly careful about these factors. And the next point is stability of tenure of personnel.
ये एक बहुत बड़ा इशू है जी पाकिस्तान में। जब हम पब्लिक सेक्टर में बात करते हैं, आल्सो वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर, कि जब हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, तो ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए आपने क्या किया है, उनको जॉब गारंटीज क्या हैं, उनको जॉब प्रोटेक्शंस क्या हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल मीन्स दैट कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको उनकी जॉब का जो टेन्योर है, उनकी जो जॉब का ड्यूरेशन है, उसमें उनको स्टेबिलिटी दी जाए, उनको पीस ऑफ माइंड दिया जाए। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू गिव स्टेबिलिटी ऑफ जॉब एंड देन व्हेन यू गिव अ पीस ऑफ माइंड टू योर एम्प्लॉइज, तो रिजल्ट इज ऑफ कोर्स the better performance of an organization and the better performance of those particular individuals. An initiative, keenness to work. Again, this is one of the wonderful general principles of management, that the employees who are working in the organization, they should develop that habit of taking initiative. तो अगर हम देखते हैं कि हमें दूसरे मुख्तलिफ और जो इदारे हैं जिन्होंने एक्सेल किया है, जो बहुत ग्रो कर गए हैं, तो व्हाट आर द रूट कॉजेज, व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो हमें डेफिनेटली इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि डेफिनेटली उसके लिए आपने मुख्तलिफ इदारों को ऑब्जर्व करना है, वहाँ से डाटा लेना है और उस डाटा की रोशनी में आपने एनालाइज करना है कि हम किस तरह से इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन जो मोटिवेशन फैक्टर है, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड एस्प्रेट डिकोप्स union is strength, teamwork. So union is strength. I always say this thing, that union is always a strength. So it means that if you have harmony, if you have strong cooperation, strong coordination, there is harmony. And when there is harmony in the organization, of course there is a strong teamwork. So जब हम teamwork की बात करते हैं, what is team? Team means that a group of people, a set of people. It could be 2, 3, 4 or more than that. So 2 or more than 2 people, when they can form an organization, they can register it, and then of course they can move forward. So the thing is कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे मोटिवेशन हो। नाउ मोटिवेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि आपका एक इनिशिएटिव जो है वो डेफिनेटली दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो एम्प्लॉयज़ जो कि इनिशिएटिव लेते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड, और इन एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, आई बिलीव दैट। तो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपकी मोटिवेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? What is coming in your mind? Okay. Organization आपके लिए क्या कर सकती है? Okay. They can take care of you, one thing. Okay. How they can take best care of you? Okay. Meaning that they need to provide financial and non-financial rewards. Like for example, if your organization supports you in your studies, if the organization motivates you for your studies, this is a non-financial reward, because training and development and education is a non-financial reward. Now what about the financial rewards? Like for example, increase in salaries or getting bonuses, things like that. So when you get something in the shape of finances, so that is called the financial reward. So how we can improve the situation, how we can ensure that the employees who are working in this organization, they start taking initiative, that is only possible with the help of this motivation. And then the final principle of management according to the philosopher is aspirate decops. Now union is strength, teamwork. Now here the philosopher is focusing on the importance of teamwork. Okay, teamwork is really very important for any organization, and union is strength. So if there is no union, like for example, if people are not united in the organization, if they don't have a teamwork, if they don't have a harmony, if they lack cooperation, if they lack coordination, if they are not loyal with the organization, if they are not loyal with each other, so what happens? Of course there is lack of harmony, or there is no teamwork, or lack of teamwork. So definitely united we stand and divided we fall. So here we mean that and teamwork can result in, of course, better performance. Okay, thank you very much all of you, and I'm really thankful that for your kind attention. Inshallah, see you in the next lecture. Thank you.